students, a very big and warm welcome to all of you. I hope you all are doing great. So student, before starting the session, let me introduce myself to you. This is Pooja Rawat with you, and today we are going to learn about an interesting topic of English grammar, that is phrases and clauses. So our learning objectives are the students will be able to understand phrases, adjective phrases, adverb phrase, noun phrase, clauses, independent clause, dependent clause, conditional, zero conditional, the first conditional, the second conditional, the third conditional. तो ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. Phrases. A phrase is a group of words that makes sense but not complete sense. It has no subject and no predicate. So हमें बताइए, phrases आपके just group of words होते हैं. इसमें कोई भी ना subject होता है, ना इसमें predicate होता है, और ना ही आपको complete sense देता है. जैसे कि example, in the east under the blue sky. Quick tips. A phrase may function as a verb, a noun, an adverb or an adjective. Now kind of phrases. phrases भी आपके तीन तरीके के होते हैं. पहला होता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज, दूसरा होता है एडवर्ब फ्रेज एंड तीसरा होता है आपका नाउन फ्रेज. सो पहले हम बात करेंगे एडजेक्टिव फ्रेज की. Adjective phrase, it provides more information about the noun or pronoun it is describing, such as its characteristics, qualities or attributes. Example, she got this lovely pink dress today. Modifies noun dress. The boy from my tuition is going to play in the finals. Modify nouns boys. ठीक है, तो यहाँ पर lovely pink जो है आपने देखा ये ड्रेस को मॉडिफाई कर रहा है. इसी तरीके से जो आपका नाउन है बॉय, वो स्पेसिफाई कर रहा है कि कहाँ से. माई ट्यूशन से, फ्रॉम माई ट्यूशन इज गोइंग टू प्ले इन द फाइनल्स. Adverb phrase, a group of words that performs the function of an adverb in a sentence is called adverb phrase. So group of words जो होते हैं जो आपके function करते हैं adverb की तरह, वो आपके adverb phrase माने जाते हैं. Examples यहाँ पे दिए गए. I drove my car at a very high speed. Modify verb drove. ठीक है, drove को ये क्या कर रहा है, modify कर रहा है. The girl was sitting next to her brother. ये sitting word को modify कर रहा है. Noun phrase, a group of words that does the work of a noun is called a noun phrase. They can be used both as a subject as well as an object. तो जो आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक नाउन का ही काम करते हैं वो नाउन फ्रेज माने जाते हैं, और इनको आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से ले सकते हैं. एग्जाम्पल्स, द बॉय इन द येलो शर्ट केम फर्स्ट इन द रेस. नाउन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है. He likes to eat ice cream coated with chocolate. नाउन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है. नाउ क्विक टिप्स. If the group of word acts like a noun, noun phrase. If the group of word describe a noun, pronoun, adjective phrase. The boy is in the yellow shirt. Noun phrase है in the yellow shirt, ये आपका adjective phrase है. Clauses के बारे में बात कर लेते हैं. Clause is a group of related words that contains both a subject and a verb predicate. A clause can be used on its own as well. So clause जो होता है ये आपका group of word होता है जो कि किसी न किसी word से related होता है, और यहाँ पे आपका subject, verb, predicate सब कुछ होता है. जैसे कि examples, we will go to the park when the rain stops, has two clauses. Everyone was waiting for him but he didn't come. It also has two clauses. So independent clause क्या होता है? This clause, also known as the main clause, expresses the whole meaning. It can either stand on its own as a sentence or be combined with one or more independent clauses to form a sentence. So ये जो आपके independent clauses होते हैं वो किसी पर depend नहीं होते. ये खुद से sentence में stand alone करते हैं, और इन्हें आप कंटिन्यू कर सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं विद
वन और मोर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए. ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग. सो ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, ये आपका अपने आप में ही एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. शी लव्स टू रीड नॉवेल्स. द हाईलाइटेड वर्ड्स आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड दे मेक sense on their own without any additional information. Now quick tips. Dependent clauses don't make complete sense on their own. अब dependent clause जो होता है वो हमेशा meaning के लिए दूसरे पे depend रहता है, ठीक है. तो ये इनका खुद का meaning या खुद का sense नहीं होता, but they are different from phrases because they at least contain a subject and a verb. Phrases neither make complete sense on their own nor they have a subject verb pair. So आपको दोनों के बीच में अंतर नज़र आ गया. phrases में आपका complete sense नहीं दिया जाता क्योंकि ना ही इसमें subject होता है ना ही इसमें verb होता है, लेकिन आपके clauses जो होते हैं इनमें आपका कहीं ना कहीं subject भी होता है, predicate भी होता है, verb भी होता है. Dependent clause, a subordinate or dependent clause expresses an incomplete intent and cannot function on its own. They begin with the words such as after, although, because, before, if, but, since, that, until, what, when, where, who, which and why. Examples, we have to finish our work before we go out for meeting. My office is having a Diwali celebration but I cannot participate. Types of dependent clauses के बारे में जान लेते हैं. पहला होता है आपका adjective clause, दूसरा होता है adverb clause और तीसरा होता है noun clause. Highlighted words are dependent clauses. As despite having a verb and a noun, they are incomplete, they do not make complete sense on their own. Dependent clause are of three types. पहला होता है आपका adjective clause, and adjective clause does the function of an adjective. It is a type of dependent clause that modifies a noun or a pronoun. It begins with a relative pronoun or relative adverb such as that, when, where, who, whom, whose, which and why. सो एडजेक्टिव क्लॉज जो होते हैं ये आपके एडजेक्टिव की तरह ही फंक्शन करते हैं और ये आपका टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है. ये हमेशा रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब से ही स्टार्ट होता है. एग्जाम्पल्स हैं माई डॉग पाशा हु लव्स मैंगोज ईट्स देम अंडर द डाइनिंग टेबल. ग्रीन वेजिटेबल्स विच मैनी पीपल डिसलाइक आर फिल्ड विद न्यूट्रिएंट्स. These clauses add to the noun subject in these sentences and act as an adjective, therefore are adjective clauses. Adjective phrases can be converted into adjective clauses by adding the missing verb and a noun. अब हम बात करते हैं adjective phrases की और adjective clauses की. Abraham is the man responsible for the mess. ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है. द बॉय प्लेइंग विद मी वॉज रजत. अब्राहम इज द मेन मैन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस. ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है. द बॉय हु वॉज प्लेइंग विद मी वॉज राहुल. In the adjective phrase in the sentence, we have added a subject who to make them a clause. Adverb clause, and adverb clause does the function of an adverb and modify an adjective. An adverb verb or phrase. Adverb clauses begins with the word such as appear, after, although, because, before, if, since, then, until, when and while. So adverb clauses जो होते हैं ये आपका adverb की तरह ही function करते हैं और adjective और adverb या फिर phrase और verb को ये modify करते हैं. Example, it is cooler than it was yesterday. When they reached the school, they tiptoed to stand in the assembly. The play was better than I expected to be. In the first and second examples, the clauses modify the verb is and tiptoed respectively, while the third example, the clause is adding on to the adjective better. Adverb phrases can be converted to adverb clauses by adding verb or a noun. So first और second example में आपने देखा जो आपके clauses हैं वो verb को modify कर रहे हैं, जो कि आपका is
tiptoed है respectively. थर्ड एग्जाम्पल में जो आपका clauses है, clause जो है वो ऐड किया गया है to adjective better. अब हम बात करते हैं एडवर्ब फ्रेजेस की और एडवर्ब क्लाउजेस की. शी वॉज टाइपिंग ऑन द लैपटॉप वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक. शी वॉज टाइपिंग ऑन द लैपटॉप वाइल शी वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक. बिफोर गोइंग टू बेड ही एक्सपीरियंस और एक्सरसाइज. बिफोर ही वेंट टू द स्कूल ही एक्सरसाइज. तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं. Now noun clause, a noun clause does the function of a noun. Noun clauses begin with a word such as how, they, that, what, whatever, when, where, whether, which, whichever, who, whoever, whom, whomever and why. So ये जो noun clauses होते हैं ये आपके noun की तरह ही function करते हैं और हमेशा ये ऐसे word से start होते हैं जैसे कि what, when, where, whether, which, whichever, etc. Example, I don't know what he wants. Whoever is the last one to leave will turn off the lights. Whatever happens to my brother is your responsibility. In the above, highlighted words are noun clauses. They are incomplete in themselves and cannot be used on their own. There are either the object or two subject. First example of a subject or a verb. Second and third examples. Noun phrases can be converted into noun clauses by adding verbs and a noun. Now we will learn about the noun phrase and noun clauses. The boy in the red shorts was running fast. The boy who was wearing the red shorts was running fast. The bell in the school were ringing loudly. The bell that were in the school were ringing loudly. Next is conditionals. They are used to express a hypothetical situation and it is possible result or consequences. Conditional sentences are generally categorized into four main types, often referred to as conditional clause or if clauses. So ये आपके हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये आपको एक पॉसिबल रिजल्ट देते हैं या कॉन्सिक्वेंस को बताते हैं. कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उनको फोर मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है. ठीक है, जैसे कि पहला है आपका जीरो कंडीशनल. It is used to express general truths, scientific facts and situations that are always true. Structure if plus present simple. So zero conditional जो है ये आपके जनरल ट्रुथ्स को, साइंटिफिक फैक्ट्स को, सिचुएशंस को दर्शाने के लिए एक्सप्रेस किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं जो कि ट्रू होती हैं. ठीक है, इसमें आपका स्ट्रक्चर इफ़ के साथ आपका प्रेजेंट सिंपल आता है. Example, if you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Quick tips, the conditional clauses are reversible. That is, either of the clauses can come first. So, जो आपके conditional clauses हैं वो आपके reversible हो सकते हैं, यानी कि either or of the clauses हो सकते हैं जिसमें आपके पहले आते हैं. If you don't water plants, they die. If the sun sets, it gets dark. तो ये आपके क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं या कुछ फैक्ट्स हैं जो इफ या जीरो कंडीशनल के थ्रू समझाए जा सकते हैं. The first conditional, it is used to express a possible condition and its probable result in the future. Structure if plus present simple, will plus infinitive. Example, if it rains, I will stay at home. We may use unless in place of if and change will to won't. Example, you will pass the test if you work hard. You won't pass the test unless you work hard. We will go for a picnic if the sun shines. We won't go for a picnic unless the sun shines. The second conditional, it is used to express an unlikely or imaginary condition and its a possible result.
Structure if plus past simple would plus infinitive. Examples: if I won the lottery, I would buy a new car. If they made me the principal of the school, I would change many things. The structure is usually if plus a simple past tense and would plus infinitive. The if event in the second conditional is either unlikely or hypothetical. सो सेकेंड कंडीशनल जो होता है ये आप यूज़ करते हैं अनलाइकली और इमेजिनरी कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे कि इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ न्यू कार। ठीक है, तो ये क्या है, इमेजिनेशन पे चल रहा है। अगर मैं लॉटरी जीता हूं तो मैं न्यू कार खरीदूंगा। एग्जाम्पल्स: इफ ही वर हियर ही वुड नेवर अग्री। अनलाइकली: if I won a lottery, I would buy a yacht. Unlikely: if they made me the principal, I would declare every Saturday a holiday. Hypothetical: if I got a chance, I would go and live in Siberia. Hypothetical. Sometimes the if event in the second conditional is unlikely or hypothetical to the point of being unreal. Examples are: if I were a bird, I would fly. If I were an alien, I would be able to travel across the universe. So यहाँ पे आपके सेकेंड इवेंट में जो सिचुएशंस होती हैं कभी कभी सेकेंड कंडीशनल होती है या फिर हाइपोथेटिकल होती है। The third conditional, it is used to express a past hypothetical condition and its result often related to something that didn't happen. Structure if plus past perfect would have plus past participle. तो ये ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन को दर्शाता है या दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि कभी कभी होती ही नहीं है या कभी हुई ही नहीं होती। जैसे कि if I had studied harder, I would have passed the test. If he had invited me, I would have gone. अगर उसने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, but he didn't invited me, so I didn't go. ठीक है, the structure is usually if plus past perfect tense and would plus perfect infinitive. अब आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे, प्रैक्टिस शीट पे। फर्स्ट इज circle the adjective phrase in the following sentences. The brightly colored flowers bloomed in the school garden. तो यहाँ पे adjective phrase है आपका brightly colored flower. Everyone in the hall was absolutely silent. So यहाँ पे आप लिखेंगे absolutely silent. He is a kind and compassionate person. So kind and compassionate person जो है ये आपका adjective phrase है। We went to Domino's on the Mall Road. So on the Mall Road आपका adjective phrase है। She lives in a small cozy cottage by the lake. Small cozy cottage by the lake है आपका phrase. I bought a trouser with 6 pockets. So with the 6 pockets आपका adjective phrase है। The old abandoned house stood at the end of the road. So आप यहाँ पे at the end of the road भी circle कर सकते हैं, underline कर सकते हैं। Match the word phrases to their meaning. One has been done for you. So यहाँ पे accurate का आपको meaning circle या underline करके बताया गया है exact. So far का meaning आप लिखेंगे till now. ठीक है, variation का means होता है which is a deviation. Path breaking work, that is a new way of doing things. Traditional means आपका not modern होता है। exist का means होता है आपका क्या करना, लिव करना। Now put the word phrases from column A in the bracket. So column A आपने जो ऊपर देखा था उसके word और phrases आपको इन fill in the blanks में fill करना है। It is dashed in our country to light lamps on Diwali. So it is a tradition in our country to light a lamp on Diwali. Our progress in the field of technology is वेरी मॉडर्न, या आप यूँ कह सकते हैं कि जो कि काफ़ी स्लो है। तो आपको ऊपर जितने भी आपके वर्ड्स हैं कॉलम ए में वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। Underline the noun phrases in the following sentences. She was reading an engaging novel by the fireplace. So noun phrases जो हैं वो आपको यहाँ पे underline करना है। जैसे कि she was reading, ठीक है,
She admired the intricate design of the antique jewelry. Again आपका यहाँ पे noun phrase आ जाएगा antique jewelry. The friendly cat that I adopted from the shelter is a very affectionate. So आप यहाँ पे friendly cat को underline कर सकते हैं. The smiling baby won the contest. Smiley baby को underline करेंगे. The laughter of children echoed through the playground. So laughter of children को या फिर children's echoed को भी आप underline कर सकते हैं. He gave an insightful and thought-provoking remark. His collection of vintage coins is displayed in a glass cabinet. So यहाँ पे आपका vintage coin या फिर glass cabinet आपके दोनों ही noun phrase हो सकते हैं. John described his friend's new car with sleek, low body and vivid exterior color. So यहाँ पे आपका John और जो कार है उसको आप यहाँ पे underline कर सकते हैं. Identify the independent and dependent clause in these sentences by underlining the dependent clause and circling the independent clause. One has been done for you. So example आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको independent clause और dependent clause को क्या करना है circle और underline करना है accordingly. Whenever I am feeling sad, I talk to my friend Prachi. ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा independent clause को circle किया है and dependent clause को underline किया है. Next, when she finished her work, she left quietly for home. तो यहाँ पे she left quietly for home आपका independent clause है. Rohan is a smart and young boy who loves to play the guitar. So Rohan is a smart and young boy. ये आपका क्या है? Independent clause है. The girl with brown eyes was sitting at the back and crying. So यहाँ पे आपका the girl with brown eyes was sitting जो है ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है. एट द बैक एंड क्राइंग ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है. शमा वॉज लीडिंग द रेस अंटिल द वेरी एंड. सो शमा वॉज लीडिंग द रेस ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है. द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग लास्ट नाइट. सो द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर वॉज सिंगिंग एट द लास्ट नाइट. यहाँ पे आपका जो मैन है ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है. लिव्स नेक्स्ट एट द डोर सिंगिंग अ लास्ट सॉन्ग लास्ट नाइट ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है. नाउ complete the following first conditionals by putting the verbs given in bracket in the right sense. If the sun shine we go for a picnic. So हम लिखेंगे we go for a picnic until the sun shines. It is rain we stay indoors. We stay indoor because it is rain. We go if he invite me. I go to his party if he invites me. ठीक है, इसी तरीके से बाकी sentences को भी आप complete करेंगे. Complete the given sentences in second conditional form. If I was an alien, I will be living in another planet. If I was a giraffe, I will be eating high or tall trees, plants या फिर leaves आप लिख सकते हैं. If I was a prime minister of India, I would live in a luxury house or I will do something for my country. If I was a chess champion, I will win a gold medal for my country. If I was a bird, I will fly high. Yeah, I would fly high in the sky. Complete the given sentences in third conditional forms. If they had left earlier, they would have catch the train. If she had studied well, she would have got marks in the examination. If he had told me the truth, I would have forgive him. If you had finished your homework, you will get a new toy. If the company had hired me, I will do my best for the country. If they had scored one more goal, our team would have won the match. So next we have activity.
An accident occurred in the crowded Janpat area between a car, an auto rickshaw, and a motorbike. This is the policeman's report of accident. Read it and then complete the sentence. तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो जो वाहन हैं या जो आपके व्हीकल्स हैं उनके बीच में क्या हो गया है, एक टक्कर हो गई है. तो आप एक पुलिसमैन हैं और इस एक्सीडेंट की रिपोर्ट आपको तैयार करनी है. So as you can see, report is given here. A car DL2CF 5249 was traveling slowly at 30 km per hour along Janpat. A cow suddenly ran in front of the car. It was being chased by a street dog. The car stopped suddenly to avoid hitting the cow. An auto rickshaw on the road could not apply the brake in time as the driver was not experienced and did not know what to do. A bike, a cab 322 which was following close behind the auto rickshaw could not stop in time because its brakes failed. The rider fell off the bike and fractured his arm. So if the car had been traveling fast, so क्या होता, ये आपको यहाँ पे conditions जो है बतानी. If the car had not come in front of the cow, अगर नहीं आती तो क्या होता. If the street dog had not chased the cow, if the car DL2CF 5249 had not stopped suddenly, if the brakes of the bike had been effective, if the rider had not fallen off the bike, if the driver of the auto rickshaw was more careful, if the rider of the bike was wearing a helmet. तो इस तरीके से इनमें आपको कंडीशंस लिख के फिल करना है कि अगर वहाँ पे ये सिचुएशन होती तो क्या होता. So student, I hope you understood the chapter really well. Now you will revise the chapter and yes, do not forget to practice the exercise.